नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने आज आम गोटे बैच गोटे स्टार्ट करवा एमसीक्यू मास्टर बैच जहाँकि ओडिशा पुलिस एसआई महत्वपूर्ण रमसीक्यू मास्टर बैच रे मु प्रत्येक चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपण सहित डिस्कसन करी। आजिकार चैप्टर रही कंप्यूटर फास्ट विषय आम आज स्टार्ट करवा जहाँकि रही हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहीपरि भाव मु समस्त चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपण नहीं आसबि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस करके यही सब एमसीक्यू आपण तैयारी करछि। चलंतु स्टार्ट करिया। आमर आज प्रथम क्वेश्चन रही व्हिच कंपोनेंट ऑफ चार्ल्स बैबेज एनालिटिकल इंजिन वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिकल ऑपरेशंस एक्टिंग एज द मॉडर्न सीपीयूज एएलयू। यार आंसर हम ऑप्शन बी दैट इज मिल। ऑप्शन बी से कहूँ व्हिच कंपोनेंट ऑफ चार्ल्स बैबेज एनालिटिकल इंजिन। एटा भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा भी मध्य आपण मन रखिबे। एनालिटिकल इंजिन कार एनालिटिकल इंजिन होची चार्ल्स बैबेज कर जहाँकि परफॉर्म करे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस एक्टिंग एज द मॉडर्न सीपीयूज एएलयू भाव में एक्टिंग करे से कंपोनेंट होची मिल। एटी मन रखिबे सीपीयू। सीपीयू रो पूरा नाम सीपीयू होची सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू होची सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। से परी एएलयू रो पूरा नाम आपण मन रखिबे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एटा हला एएलयू एटा हला सीपीयू। ठीक से अपन स्टोर एक्ट एज ए मेमोरी होल्डिंग डाटा एंड रिजल्ट्स अप टू 1000 नंबर्स ऑफ 40 डिजिट्स इच। से मेमोरी होल्डिंग डाटा करता है स्टोर। रीडर कौन इनपुट मेकानिज्म यूजिंग जैकवर्ड पंच कार्ड्स। जैकवर्ड पंच कार्ड्स आम इनपुट करिया। आउ कौन मन रखिए चार्ल्स बैबेज इंपोर्टेंट मन रखिए चार्ल्स बैबेज को कहा जाए फादर ऑफ कंप्यूटर। Which generation of computers introduced the concept of magnetic core memory for primary storage? प्राइमरी स्टोरेज पे मैग्नेटिक कोर मेमोरी यह आसला सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। यह देखिए पे मिलता सेकंड जनरेशन कंप्यूटर रे। ठीक से बड़ी फास्ट जनरेशन थिला मैग्नेटिक ड्रॉप एंड मर्क्यूरी डिले लाइन्स। ठीक से थर्ड जनरेशन रे सेमीकंडक्टर रैम चिप्स। आ गोटे आपण मन रखिए सेकंड जनरेशन यूज ट्रांजिस्टर इन्वेंटेड बाय शकले बर्डिन ब्रैटन इन 1947। आपने एमती मन रखिए फास्ट जनरेशन है वैक्यूम ट्यूब। सेकंड है ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट। आ गोटे फोर्थ जनरेशन लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और फिफ्थ जनरेशन अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आप एमती भी मन रखिदेवे। Who among the following created world's first working programmable fully automatic digital computer named Z3 in 1941? से कुछ किए आंक भितर किए क्रिएट करथिले वर्ल्ड्स रो फास्ट वर्किंग प्रोग्रामेबल फुल्ली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर माने वर्किंग हो तो ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर यह को करथिले ऑप्शन बी दैट इज कोनराड ज्यूस। मन रखिए आलान टूरिंग को कहा जाए फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। कौन से गोटे मेसीन इन्वेंट करते जहाँकि ट्यूरिंग मेसीन। टॉमी फ्लावर डिजाइन कोलसस इको कोड ब्रेकिंग कंप्यूटर हूँ कोलसस। जॉन आटनसॉफ्ट जे कि डेवलप करते एबीसी कौन आटनसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर एबीसी इन्वेंट करते जॉन आटनसॉफ्ट। Which was the world's first commercially available single chip microprocessor introduced in 1971?
से कहूँ पृथ्वीर प्रथम कमर्शियली अवेलेबल सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर आंक भितर केउंटी यार आंसर हम इंटेल 404 इंटेल 4004 यह बहुत को एग्जाम रे देखिया पे मिलची क्वेश्चन टी इंटेल 8008 एटा गोटे होची 8 बिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रिलीज्ड इन 1972 इंटेल 400 रिलीज कराइथिल 1971 ने 8008 1972 इंटेल 8086 जाके गोटे 16 बिट सीपीयू रिलीज कराइथिल 1978 आ गोटे मन रखिए माइक्रो प्रोसेसर मार्क द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर पाखरो माइक्रो प्रोसेसर व्यवहृत है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक फोर्ट्रान एंड कोबॉल वर इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच जनरेशन कंप्यूटर जो क्यों जनरेशन कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्ट्रान और कोबॉल यूज करा जाइथिला यार आंसर हम ऑप्शन बी दैट इज सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हमें सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ने फोर्ट्रान और कोबॉल को इंट्रोड्यूस करथिले आ गोटे आल्गोलगी मध्ये दिला सेकंड जनरेशन नो कंप्यूटर तर फोर्ट्रान को डेवलप करथिले जॉन बैकस एट आईबीएम ठीक से बड़ी कोबॉल डेवलप्ड बाय कोडासिल अंडर ग्रेस हॉपर which pre-electronic calculating device was based on the concept of rhabdology and used bone rods for multiplication so कुछ अंक भितर किए concept यूज करे rhabdology concept को यूज करे bone rods for multiplication पे bone rod यूज करता है यार आंसर हवा ऑप्शन सी दैट इज नापियर्स बोन्स जहाँ को इन्वेंट करथिले जॉन नापियर जे कि स्कॉटलैंड रो जने बासिंदा used 9 wooden bone rods marked with numbers to perform multiplication and division ठीक से अबाकस को आपण मन रखियो अबाकस कोन अबाकस होची फास्ट मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस जाके इन्वेंट करा जायतिला चाइना द्वारा ठीक से पास्कल होची ब्लेज पास्कल्स गियर बेस्ड एडिंग मशीन स्टेप्ड रेकनर गॉडफील्ड लेब्रेंज 4 फंक्शन कैलकुलेटर को इन्वेंट करथिले व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर एबे कहितली जाके होची ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट्स वैक्यूम टूटा हला फर्स्ट ट्रांजिस्टर टाला सेकंड एटा होची फोर्थ एटसैक जाके होची इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर एटसैक डेवलप्ड इन 1949 बाय मॉरिस वेल्क्स इज हिस्टोरिकल बिकॉज इट वाज यह कहीं फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट फुल्ली स्केल्ड प्रैक्टिकल स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आंसर है ऑप्शन बी एटसैक बिल्ड करा जाइतिला बाय मॉरिस वेल्क्स बेस्ड ऑन जॉन भन न्यूमन्स एडवैक रिपोर्ट अनुसार याकू करा जाइतिला इट इज द फर्स्ट ऑपरेशनल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर ठीक से आपण मन रखिए यूनिवैक होची फर्स्ट कमर्शियल जनरल पर्पस कंप्यूटर जाके इन्वेंट होइतिला 1951 ठीक से इनियाक होची फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जाके इन्वेंट होइता 1946 एटा हला फर्स्ट कमर्शियल जनरल पर्पस कंप्यूटर ला यूनिवैक जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनियाक एटसैक माने फर्स्ट ऑपरेशनल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर who is universally recognized as the world's first computer programmer for writing an algorithm to calculate Bernoulli's numbers on the analytical engine तन से कुछ world's first computer programmer किए यार आंसर हवा ऑप्शन बी दैट इज आडा लवलेस होचंती वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर जे के कैलकुलेट करथिले बर्नौलीज नंबर्स ऑन द एनालिटिकल इंजिन से गोटे जन इंग्लिश मैथमेटिशियन हु वर्कड विथ चार्ल्स बेबेज सहित से काम करथिले पब्लिश्ड नोट जी कंटेनिंग द फर्स्ट एल्गोरिथम इंटेंडेड फॉर एग्जीक्यूशन ऑन ए मशीन ग्रेस हॉपर डेवलप्ड फर्स्ट कंपाइलर एंड कोबॉल लैंग्वेज India's first indigenous supercomputer Param 8000 was developed in 1991 by CDSE under the leadership of का leadership दे यह develop होइतला यार आंसर है ऑप्शन बी दैट इज डॉक्टर विजय पी भटकर
एटा मध्ये आपण मानकर इंडिया जर फास्ट इंडिजिनियस सुपर कंप्यूटर होची परम 8000 या बहुतर सीजीएल एग्जाम रे देखिया पई मिली छी। ठीक से बड़ा अपन मन रखिबे TIFRAC जहाँकि इंडिया फास्ट डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट एट TIFR मुंबई ठारे बिल्ट होइतिला। तापर आपण मन रखे डॉक्टर विजय भटकर को आम कहते फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटिंग। फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटिंग भाव आम कही था क्या डॉक्टर विजय भटकर को। हर्मन होलरेथ डेवलप्ड द tabulating machine using punched cards for which major event in history। से कहूँ हर्मन होलरेथ डेवलप करते tabulating machine को डेवलप करते हर्मन होलरेथ जहाँकि यूजिंग करते पंच्ड कार्ड्स फॉर व्हिच मेजर इवेंट इन हिस्ट्री। पंच कार्ड को कहीं यूज करते यार आंसर हम ऑप्शन ए दैट इज 1890 यूएस पॉपुलेशन सेंसस से व्यवहार करते पंच्ड कार्ड्स। The fifth generation of computers is primarily characterized by which technology integration? Our answer है option B that is ultra large scale integration and artificial intelligence। Artificial intelligence fifth generation computer ପାଇଁ ଗୋଟେ important characteristics। Fifth generation computer based on ULSI AI नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आम ये जेनेरेशन अच्छा यहाँ हूँ फिफ्थ जेनेरेशन क्वांटम कंप्यूटिंग। से फोर्थ जेनेरेशन पूर्व कही वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। थर्ड जेनेरेशन स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन मैग्नेटिक स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। हु डिजाइन्ड हार्वर्ड मार्क 1 दैट इज IBM ASSC द फर्स्ट लार्ज स्केल ऑटोमेटिक डिजिटल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर इन 1944। यह डिजाइन करथिले राव आंसर टी ऑप्शन ए दैट इज हार्वर्ड आइकेन डिजाइन करथिले वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्ज स्केल ऑटोमेटिक डिजिटल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर ताकि होची IBM ASSC। ठीक से आपण मन रखिए मक्कली एंड एकर्ट से बिल्ड करथिले एनियाक एंड यूनिवाक। सेमरक्रे को हुआ जाए फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। इनियाक कौन इनियाक फुल फॉर्म ही पकई दिए मन रखिए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर यूज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी वैक्यूम ट्यूब्स फॉर इट्स सर्किटरी। से कुछ इनियाक केते वैक्यूम ट्यूब यूज करे फॉर इट्स सर्किटरी पे केते वैक्यूम ट्यूब यूज करे। यार आंसर हम ऑप्शन बी दैट इज 18,000 वैक्यूम ट्यूब से यूज करता है। ENIAC contains 17,468 vacuum tubes, weighted 30 tons, consumed 150 kilowatt power। ताको बिल्ड कराइथिला जॉन मैकेले एंड जे प्रॉस्पर एकर्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। इट वाज फर्स्ट जनरेशन नॉन स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। यह भी मतलब गोटे इंपोर्टेंट फर्स्ट नॉन स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर होची ENIAC। The Pascaline mechanical calculating machine invented by Blaise Pascal in 1642 was based on which operational mechanism? यह बेस्ड करछि गियर्स टू थ्रू व्हील्स एंड डायलर्स मेकानिज्म रे। कोटा पास्कलाइन्स मेकानिकल कैलकुलेटिंग मशीन टा जाके इन्वेंट करा जायतिला ब्लेज पास्कल को द्वारा। याको इन्वेंटेड बाय 19-year-old French mathematician Blaise Pascal to assist his father in tax collection। Used 8 rotating gears or wheels with digits 0 to 9। Could only perform addition and subtraction। यह केवल addition कर पारे subtraction करि परतुला। Which computer design introduced the landmark stored program architecture where both instructions and data share the same memory space? यार आंसर हम ऑप्शन बी दैट इज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। या कह जाए वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। Which was the world's first commercially sold general purpose computer delivered to the US Census Bureau in 1951? से कुछ वर्ल्ड रो प्रथम कमर्शियल सोल्ड जनरल पर्पज कंप्यूटर टी केमती। यार आंसर हम ऑप्शन बी दैट इज यूनिवैक
1 यूनिभाग 1 जहाँकि डिजाइन कराइथिला जे प्रेस्पर एकट एंड जॉन मैकलेंको द्वारा द स्टेप्ड रकनर created by Gottfried Wilhelm Leibniz in 1673 was superior to the Pascaline because it could perform चेकुजे Leibniz rule टा superior Pascaline थारु superior कोड पे यार आंसर आबो ऑप्शन बी दैट इज addition subtraction multiplication division and square roots एटा सब गुटरे होई परिबो एटा गोटे सिस्टम थिला आल्सो इन्वेंटेड एटा मन के Leibniz also invented a modern binary system that is 0 and 1. Atanasoft Berry computer constructed between 1937 to 1942 at a Iowa State College pioneered which fundamental technology? या केउं टेक्नोलॉजी व्यवहार करिकी Atanasoft Berry computer तैयारी करा जायतिला एन आंसर होबो ऑप्शन बी दैट इज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजेनरेटिव कैपेसिटर मेमोरी Time sharing operating systems and real-time operating systems were first introduced in which generation computer? which is TSO real-time operating system time sharing operating system first introduced केउ generation computer रे प्रथम थर पई introduce हुईतिला यार आंसर अब ऑप्शन सी दैट इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थर्ड जनरेशन enabled multi programming time sharing and real time processing operating system फर्स्ट जनरेशन रे नो ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड जनरेशन थिला सिंपल बैच प्रोसेसिंग सिस्टम फोर्थ जनरेशन पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज माइक्रोसॉफ्ट डॉस यूनिक्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस द अल्टर 8800 released in 1975 using the Intel 8080 CPU holds significance in computer history as Her answer about that is the first commercially successful personal computer kit जैकी होची Altair 8800 आ गोटे मन रखिए बिल गेट्स एंड पॉल एलन फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट फाउंड करथिले बिल गेट्स एंड पॉल एलन who is known as the father of supercomputing for developing the Cray 1 supercomputer in 1976 so father of supercomputing क्या कहा जाए यार आंसर हम ऑप्शन बी दैट इज सेमर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग बोली हमें कही था जी की डेवलप करते क्रे 1 सुपर कंप्यूटर What is the internal memory speed or access time scale of a first generation computers compared to third generation computer? यार आंसर हम आम जब कंपेयर करवा फर्स्ट जनरेशन विथ थर्ड जनरेशन से फर्स्ट जनरेशन था मिली सेकेंड थर्ड जनरेशन अच्छी नाना सेकेंड तो यार आंसर है ऑप्शन ए ठीक से आप मन रखिए फर्स्ट जनरेशन मिली सेकेंड 10 to the minus 3 सेकेंड सेकेंड जनरेशन माइक्रो सेकेंड 10 to the minus 6 सेकेंड थर्ड जनरेशन रे नानो सेकेंड साइकिल 10 to the minus 99 सेकेंड फोर्थ जनरेशन स्पीड होची पिको सेकेंड दैट इज 10 to the minus 12 सेकेंड फिफ्थ जनरेशन होची फेम्टो सेकेंड फेम्टो हला 10 to the minus 15 सेकेंड Joseph Mary Jacquard revolutionized computer history in 1904 by introduced punch cards into which machine से कुछ पंच कार्ड रे केउ मशीन रे से व्यवहृत करथिले जोसेफ मैरी जैक्वार्ड यार आंसर हबो ऑप्शन बी दैट इज मैकेनिकल टेक्सटाइल लूम मैकेनिकल टेक्सटाइल लूम which computer is historically recorded as the first stored program machine to successfully execute an electronic program in June 1948 यार आंसर हबो ऑप्शन बी दैट इज मैनचेस्टर बेबी SSEM What does VLSI stand for in fourth generation computer technology? Then VLSI stands for very large scale integration. Very large scale integration.
ठीक से भाया MSI हूँ मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, SSI हूँ स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन जहाँकि हूँ 10 ट्रांजिस्टर, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन रे अप टू 100 ट्रांजिस्टर, लार्ज स्केल रे अप टू 1000, वेरी लार्ज स्केल रे अप टू 10000, अल्ट्रा लार्ज स्केल रे अल्ट्रा लार्ज मिलियंस एंड बिलियंस। The first commercial mini computer PDP-8 यह भी गोटे important question। first commercial mini computer टी कोउटी आंसर वाला PDP-8 से कुछ which disrupted the computer market in 1965 was manufactured by यह को disrupt करथिला कंप्यूटर मार्केट को 1965 मसीह यह को किए मैन्युफैक्चर करथिले यह को मैन्युफैक्चर करथिले ऑप्शन बी दैट इज डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। Moore's law formulated by Gordon Moore in 1965 observed and predicted that से कौन ऑब्जर्व करथिले प्रेडिक्ट करथिले मूर। यार आंसर हबो ऑप्शन बी द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन ए माइक्रोचिप डबल्स रफली एवरी 2 ईयर। से कहथिले कि एवरी 2 ईयर रे ट्रांजिस्टर टा माइक्रोचिप्स डबल हे चलियो। गोटे मन रखिबे इंटेल लो को-फाउंडर के इंटेल लो को-फाउंडर होचंदी गॉर्डन मूर, गॉर्डन मूर। The difference engine designed by Charles Babbage in 1822 was specifically built to calculate यह specifically built करा जायतिला to calculate trigonometric and logarithmic polynomial tables using finite differences। The difference engine टा Charles Babbage 1822 रे built करथिले trigonometric and logarithmic polynomial tables using finite difference। What is the first electronic general purpose computer that used to store programs designed by von Neumann, Eckert and Macaulay? Our answer होगा option B that is EDVAC। answer होगा EDVAC। EDVAC is first electronic general purpose computer जाके डिजाइन हुई थी 1945 रे। First computer designed explicitly around the stored program concept using binary math and acoustic delay lines। Which material replaced germanium to become the standard semiconductor element used in third generation integrated circuit? Her answer होगा ऑप्शन बी दैट इज सिलिकॉन। हमें जो व्यवहार करछन चिप सिलिकॉन या को रिप्लेस करछि पूर्व थिला जर्मनियम, जर्मनियम को रिप्लेस करछि सिलिकॉन। gave rise to the term silicon valley in California। California रे अधिक सिलिकॉन अछि बोली सत पे कहउ जे एटा सिलिकॉन वैली अछि कैलिफोर्निया रे। In 1973 Xerox PARC developed Xerox Alto which is landmark in fourth generation computer history for introducing या introducing कोन पे एटा होइतला। यार आंसर हला ऑप्शन बी दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस माउस एंड इथरनेट workings। Which generation of a computer saw the development of the C programming language by Dennis Ritchie at Bell Labs? Our answer होगा option C that is third or early fourth generation, early fourth or third generation computer। C language यह क्रिएट करा जायतिला डेनिस रिची एट 80 and T Bell Labs to rewrite Unix operating system derived from B language। The computer pioneer Douglas Engelbart is famous for inventing which essential hardware device in 1964। से कहीं की फेमस थिले से कोउति पई डगलस एंजलबर्ट फेमस थिले। और आंसर होगा ऑप्शन बी दैट इज कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस को इन्वेंट करथिले डगलस एंजलबर्ट 1964 मसीहा। Demonstrated it in the famous 1960 mother of all demos alongside hypertext screen share and graphical user interface concepts। Among them Douglas Engelbart invented the wooden computer mouse in 1964। 1964 रे कंप्यूटर वुडन कंप्यूटर माउस इन्वेंट करथिले डगलस एंजलबर्ट।
What primary secondary storage medium was used in second generation computer? So कुछ second generation computer रे हम कौन व्यवहार करी थांते? यार आंसर है ऑप्शन बी, that is magnetic tapes and magnetic discs को हमें second generation computer रे व्यवहार करी थांते. Who coined the term artificial intelligence at the Dartmouth conference in 1956? से कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कॉइन जो टर्मटा ताको किए कॉइन से कॉइन टर्मटा किए कॉइंड करथिले? यार आंसर अब ऑप्शन बी, दैट इज जॉन मैकार्थी. जॉन मैकार्थी. AI forms the core of fifth generation computing. The floppy disk was first invented in 1967 by an engineering team at IBM led by यहाँ लेट करा जाइथिला ऑप्शन ए, दैट इज अलान सोगाट. अलान सोगाट जे कि इन्वेंट करथिले 8 इंच रीड ओनली फ्लॉपी डिस्क, लेटर इंट्रोड्यूस 5.25 इंच एंड 3.5 इंच फ्लॉपीज. से फाउंड करथिले स्वागट एसोसिएट्स एंड सीगेट टेक्नोलॉजी. What physical principle allowed vacuum tubes to amplify signals in first generation computers? Our answer is option B, that is thermionic emission of electrons. Thermionic emission of electrons. अगला बनना किया vacuum tubes. Vacuum tubes को इन्वेंट करते ले जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग एंड लेडी फॉरेस्ट. अगला बनना किया heated filament emits electrons in a vacuum sealed glass tube. In 1960, India installed its first digital computer at the Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) named. So कुछ इंडिया इंस्टॉल करथिला फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर एट TIFR. यार ना कौन? यार ना होची ऑप्शन बी, दैट इज TIFARAC. TIFARAC. Which architectural classification distinguishes RISC from CISC microprocessor introduced in fourth generation computer? Your answer is option A, that is instruction set complexity and execution cycles. जहाँकि क्लासिफिकेशन डिस्टिंग्विश करते RISC फ्रॉम CISC. RISC कौन? RISC होची रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जहाँकि होची सिंपल सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन. ठीक से CISC होची कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स मल्टी साइकिल इंस्ट्रक्शंस. Who invented the first commercial dynamic RAM, that is DRAM, semiconductor memory chip Intel 1103 in 1970? Your answer is option A, that is Robert Dennard. Robert Dennard. रॉबर्ट डेनार्ड जे कि इन्वेंट करते सिंगल ट्रांजिस्टर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी सेल इन 1966. Intel released Intel 1103 in October 1970, replacing magnetic core memory in third or fourth generation computers. Which British deciphering machine designed by Alan Turing and Gordon Wilkman cracked German Enigma codes during World War II? Our answer is option A, that is Turing bomb. Turing bomb. Magnetic drum storage used in first generation computers was invented in 1932 by magnetic drum storage को इन्वेंट करा जाता है, इन्वेंटेड बाय ऑप्शन ए, दैट इज गुस्ताव ताउस्चेक. गुस्ताव ताउस्चेक जे कि इन्वेंट करते magnetic drum memory in 1932. Widely used as a main working memory in first generation computers like IBM 65. Which was the first supercomputer installed in India for weathering forecasting at AMD Delhi in 1989?
से कहूँ फास्ट सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल इन इंडिया आर आंसर हम ऑप्शन बी दैट इज क्रे XMP 514 microprocessors belonging to fourth generation computers use which bus architecture for 16-bit data processing that is Intel 8086 our answer haba option B that is 16-bit data bus and 20-bit address bus. Which operating system released in 1981 became the standard operating system for fourth generation IBM personal computers? Our answer haba option B that is MS-DOS. MS-DOS ର full form होची Microsoft Disk Operating System. What key feature differentiates fifth generation computers from fourth generation computer? से कहूँ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर रु किए अलग करे तार आंसर होची ऑप्शन बी दैट इज नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोग्रेसिंग सिस्टम्स एंड बायो चिप्स. Which computing pioneer formulated the theoretical concept of a universal machine in 1936 that can simulate any computer algorithm? Our answer haba option B that is Alan Turing. I would मन लगे Turing had the Nobel Prize of Computer Science. Which famous first generation computer model produced by IBM in 1953 was known as the magnetic drum data processing machine? Our answer होची option A that is IBM 650. IBM 650 होची first mass produced commercial computer in the world. Used magnetic drum memory एटी यूज करते हैं magnetic drum memory यूज करे ठीक से भली IBM 360 फेमस थर्ड जनरेशन कंप्यूटर मेनफ्रेम फैमिली यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स. आमर आज शेष क्वेश्चन मैच द कंप्यूटर जनरेशन विथ इट्स प्राइमरी टेक्नोलोजी हम मैच करवा. फर्स्ट जनरेशन मु प्रथम कही वैक्यूम ट्यूब स्थान 1 टा हला आर. सेकंड जनरेशन 2 वैक्यूम ट्यूब पर कही ट्रांजिस्टर 2 टा हला SA. तब 3 थर्ड जनरेशन होची IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स. फोर्थ जनरेशन वेरी लार्ज स्केल माइक्रो प्रोसेसर. से ये क्वेश्चन आंसर होची 1R 2S 3 अच्छी ऑप्शन ए. तो क्वेश्चन आंसर होची ऑप्शन ए. यहाँ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप 4टा क्वेश्चन भल भाव डायरेक्ट क्वेश्चन परीक्षा पड़ी आस भल भाव घोषिकी मन रखु. जदि भिडियोटी आपण मानक भल लगी था तब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने भूलिए ना. यही भाव मो कंप्यूटर गोटे MCQ मास्टर बैच स्टार्टिंग करछि जो कि आम प्रत्येक विषय चैप्टर वाइज MCQ डिस्कशन करवा टिल ओडिशा पुलिस SI एग्जाम. ओडिशा पुलिस SI एग्जाम नहला पर्यंत आम ये सेसन आनी आसवा एवं जितेबले पाखे आसो ओडिशा पुलिस SI आम मॉक टेस्ट अधिक अधिक आपण सहित आलोचना करी. से चैनल सहित जोड़ी हो रही था एवं यही क्लास PDF टी आपण मैंने चाहिए आम टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करेंगे. टेलीग्राम चैनल लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे दीजिए. आउ जदि वीडियोटी भल लगे तेज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने भूलिए ना. सांग मैंने जो मैंने निज सांग मान शेयर करें जो मैंने आगामी ओडिशा पुलिस SI प्रिपेरेसन करुँच. वीडियो कंप्लीट देखते आपको अशेष धन्यवाद.